Everyone, my name is Sagar Kumar, Assistant Professor, RPIT. So today we are discussing about DOM standard and methods. So we can discuss various things about DOM and their types. So now we are discussing more about their methods, how they are used in our web development. So it is used in programming, used as a programming interface that represent the structure of our HTML or XML document. So we are basically focused on only HTML as a tree of objects. It allows developer to manipulate the document's structure, style, and content dynamically. So here are the key DOM standards. Like first is node hierarchy, node types, node levels, and core interfaces. Like DOM node hierarchy, the DOM is organized document as a hierarchical tree structure. Node include element like attribute, text, comment, and document itself. Node types like element node, attribute node, and text node. Element node like our tags like div is a container, our paragraph tag, our heading tag. These are the element node. Second is attribute node like our IDs, classes, and other things. Text node is the text content of our element. Like we when we use paragraph tag, with that content which is written inside that paragraph tag is come under that text node. Third is our DOM level, like first level DOM feature of HTML. Second level, it is supported feature for events and traversals like event like on click event, mouse over event, and other. And level 3 is enhanced XML features and standardization. Fourth is core interface like document, element, and node. So you know document represent entire web page, element represent the HTML element, and node represent the generic interface for which all other document types are inherited. So now we see the methods. सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंट लेवल मेथड. फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. इसका हमने पहले भी यूज किया है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन सिलेक्ट एन एलिमेंट बाय इट्स यूनिक आईडी. Like an example, we use const element is equal to document dot get element by id header. So in this example, we select the element of HTML which have id header. Second is we can select the element by their class name, by their tag name, and by using query selectors and by using selector. So these four are the methods to select the element of our HTML. So next is our node manipulation method. You know how what is node? Node is a specific object in which there are different types of element of our HTML. So now let's take first method like document dot create element tag name. So here let's uh, let's see an example. So how we create an element. So here we create an variable in which we create document dot create element like div. In this method we create a div container. This is a this is our HTML tag like div. So here in this example we only create that element. Here we create the element like this div. Now second method is node dot append child. So this method used to append that element which we are creating in previous method. So how we can append this, like we can append like this document dot body dot append child new div. New div is the element that we are created. Third is insert before or after. So in this we can insert that element before any element which is pre-existed in our HTML. Like we can insert a node before a reference node. So here we use document dot body dot insert before. In which before here is new div that the element which we are created, and हमें इसमें किसके पाथ लगाना है वो हम सेलेक्ट करेंगे इससे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रेफरेंस. जिस भी एलिमेंट की आईडी रेफरेंस है हमें उसके उससे पहले अपेंड करना है, इंसर्ट करनी है अपनी नोड डिव. So this is the method which we are using. Now is remove child. So here we insert and here we remove. So how we remove? Remove document dot body dot remove child. Here is new div. We give the name of that element that we are created. Note how. So next method is replace. Node dot replace child. These are all you see the similar types of method, only the some changes you can understand by the naming of that methods, that what they can do. Represent one child node with another. In this we can replace the
replace the element. Like here we replace our new div method with our old div. We can create an old div element and then we can replace that element by this method. Third is attribute manipulation method. Attributes, you know, class IDs names, these are the attributes. So इनको भी हम चेंज करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है. लाइक एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, हम किसी एलिमेंट का एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, उसकी आईडी या क्लास. जैसे इस एग्जांपल में हमने प्रीवियस एग्जांपल में एलिमेंट बनाया था न्यू डिव करके, इसमें हम उसकी आईडी क्लास सेट कर रहे हैं. लाइक here we define which which attribute we select. Here we can also select id and class name and other attributes. So here we select class, and in next column we give the name of that attribute. So here we create class container. So our next is element dot get attribute. In this we can get the attribute. यहाँ से हम जो हमारा एलिमेंट है हम उसके उसके एट्रीब्यूट्स का पता लगा सकते हैं कि उसकी क्लास क्या है या उसकी आईडी क्या है. जैसे कि इसमें कांस्टेंट क्लास, हमें इसमें पता लगाना है जो हमारा न्यू एलिमेंट है उसकी क्लास के बारे में. अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे और क्लास नेम को अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा कंटेनर, क्योंकि न्यू डिव की जो क्लास है वो कंटेनर है. तो सेम इसी तरह हम एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट से. सो फोर्थ हमारा पार्ट आ गया और कंटेंट मैनिपुलेशन मेथड. लाइक द कंटेंट विच वी आर यूजिंग इन HTML. So these are two methods like element dot inner HTML. हमारा कोई भी एलिमेंट है जैसे न्यू डिव है, अगर हमें इसके अंदर इनर HTML यूज करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से अपने एट्रीब्यूट को मैनिपुलेट कर सकते हैं. इसके अंदर हम HTML टैग्स का भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमने इसके अंदर पैराग्राफ टैग का यूज किया है. इस एक डिवीजन कंटेनर के अंदर हमने एक और कंटेनर बना दिया जिसका नाम है पैराग्राफ टैग. उसके अंदर हमारा टेक्स्ट है. इसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं. सेकंड है हमारा एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट. जैसे ऊपर हमारा इनर HTML था, इसमें हम HTML भी HTML ऐड करते हैं. तो इसके अंदर हम टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं. लाइक दिस इज ओनली यूज इन पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स, इन दिस. लाइक न्यू डिव हमारा जो एलिमेंट है उसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को चेंज करेंगे या ऐड कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड ऐड कर सकते हैं. सो दैट इज अबाउट दिस. नाउ इज ट्रावर्सल मेथड लाइक नोड डॉट पेरेंट नोड. इसके थ्रू हम जो हमारी नोड है, लाइक वी हैव in this way we are using new div that is the element which we are created. So here we use parent. इसका हमें parent पता लग जाएगा इस मेथड से, parent नोड से. इसके बाद चाइल्ड, अगर इसका कोई चाइल्ड है तो हम उसका पता लगा सकते हैं. जैसे जैसे हमारा एलिमेंट है, हमने उसके अंदर ये वाला जो एलिमेंट है इसको ऐड किया था, तो इस टाइम इसका चाइल्ड है p. तो here we get the p tag here. So this is these are method working is same. like इससे हम नोड डॉट फर्स्ट साइड पता लगा सकते हैं, नोड डॉट लास्ट साइड को पता लगा सकते हैं. जैसे if they have different, there are many childs inside that container. div tag. So div of next div sibling, like if we have two containers as a siblings like first and second, so here we get know about that sibling, previous sibling and next sibling. So these are the methods. So sixth is event handling method. So these methods are used to handle events. Like we have element dot that element. In this full video we are using a new div example. So here we can add event listeners. Like if event listener हम इसमें ऐड कर देंगे, like which we are using click. तो अगर हमारा उस div के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो this function is called. What are this function do? This function pop up a alert like div click. If we click on the div, so this is the method. Finally remove, हम उसको remove भी कर सकते हैं. Same new div dot remove event listener that function. So this is all about today's lecture. Thank you very much. We will meet up in our next video.